Ram one. ओके वेट कर लेते हैं, 6-5 तक वेट करते हैं। अगर बच्चे नहीं आए, मतलब जितने भी आए, देन विल स्टार्ट। आज हमारा रियलिज़म कंप्लीट हो जाएगा और साथ ही साथ सररियलिज़म भी हम ट्राई करेंगे कि आज ही ख़त्म हो जाए। तो आपका जो ये मूवमेंट था, वो मूवमेंट आज एंड है ना। सारे मूवमेंट्स हो गए, कोई भी जो मूवमेंट है वो बचा नहीं है इस पॉइंट तक। ओके, सो 6-5 है ना। 2 मिनट और रुक जाइए, 2 मिनट बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हमारा रियलिज़म भी कंप्लीट हो जाएगा और सररियलिज़म भी आई होपफुली कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो आज आपका जो ये मूवमेंट पूरा सेक्शन है, जितने भी हमने 26 आई गेस 25 मूवमेंट कर लिए हैं, 26वां आज हम करने वाले हैं। टोटल मिला के 26 मूवमेंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे एंड देन विल मूव टू जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं। एक मिनट और। रियलिज़म कर रहे या स्टार्ट करते हैं। सो हम रियलिज़म कर रहे थे और थीम्स हो चुका था, रिप्रेजेंटेटिव ऑथर्स हमारा हो चुके थे और हम थे जो टेक्स्ट डिस्कस कर रहे थे इस पे, है ना। तो चलिए इसमें आगे चलते हैं। एक सेकेंड, या चलिए इसमें आगे चलते हैं। हमारा बॉल ऑफ फैट हो चुका था, क्राइम एंड पनिशमेंट डोस्टोवेस्की ये भी हमारा हो चुका था। नेक्स्ट है डेजी मिलर, हेनरी जेम्स, ये हमारा हो चुका था। डेविड कॉपरफील्ड बहुत ही फेमस, चार्ल्स डिकेंस, ये भी डन था। नेक्स्ट वी हैव जर्मिनल द नॉवल, एमिल जोला, रिसेंटली आपने इनका नाम काफ़ी सुना होगा। सो द नॉवल जर्मिनल 1885 इज कंसिडर्ड द मास्टरपीस ऑफ एमिल जोला। एक सेकेंड, ये हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसके बाद हम जो है मोर ऑफ अ ग्लोसरी ट्राई कर रहे होंगे ना, जितने भी लिटरेरी टर्म्स हैं हम वो डिस्कस कर रहे होंगे, ताकि जो शॉर्ट नोट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाए ना, वो आप लिख पाए, चाहे भले ही कुछ भी आ जाए, है ना। सो हम उसके ऊपर फोकस कर रहे होंगे। उसमें भी कुछ लेक्चर्स लगेंगे, बट देन आपका ऑलमोस्ट डन है ना। ओके, द नॉवल जर्मिनल 1885 इज कंसिडर्ड द मास्टरपीस ऑफ एमिल जोला, a French realist writer and the originator of the school of naturalism in literature। हमने naturalism ऑलरेडी कर रखा है। जर्मिनल उसी में अपने एमिल जोला का नाम भी सुना होगा। जर्मिनल is set in a mining town and portrays the socio-economic एक सेकंड रुकिए, socio-economic tensions between the working class miners and the upper class mine owners। The novel depicts the effects of a workers' strike
on the mining community and addresses major political theories of the day, such as Marxism, socialism, and trade unionism. Zola used the metaphor of a monster to describe the coal mine, which devours the workers who enter it. In Germinal, Zola accurately represents the conditions of two separate social spheres as well as tackling important political debates regarding inequalities in socio-economic class. नेक्स्ट जो अपना आपका वर्क है वो है अ हज़ार्ड ऑफ न्यू फॉर्च्यून्स बाय विलियम डीन हाउल्स, है ना, बाय फॉरमोस्ट अमेरिकन रियलिस्ट विलियम डीन हाउल्स is regarded as one of the author's most important novels. A Hazard of New Fortunes takes place in New York City, concerns a group of people trying to start a magazine. Howells was inspired by his reading of Tolstoy's War and Peace, जो again बहुत ही important work है, definitely आपको पढ़ना चाहिए. Tolstoy's War and Peace to write a long novel. Wide in scope and containing many characters. The result includes 15 major characters and is notable for Howells' depiction of many sectors of society in New York City during the 1890s, as well as his rendering of the flow of life in a city teeming with people. Howells expressed strong socialist views in A Hazard of New Fortunes, and many of the characters represent differing points on the spectrum of American political opinion. So सबके सब जो है वो बहुत ही different views के थे ना. हमारे पास काफ़ी I guess 15 मेन प्रोटैगनिस्ट्स हैं, है ना, इस वर्क के अंदर. नेक्स्ट है आपका ह्यूमन कॉमेडी. द ह्यूमन कॉमेडी originally a collective title for a grouping of some 90 novels and novellas by Honoré Balzac. In his fiction, Balzac portrays all levels of French society, so realism, with impressive accuracy. He is noted for the vast number of different characters created in his fiction, numbering some 3,000 throughout the human comedy. Balzac introduced the literary device of including many of the same characters in several different novels. In managing this diverse range of characters, Balzac was a master of characterization, portraying in minute detail the psychological and sociological minutiae that make up each individual's personality and determine his or her actions. The human comedy addresses themes of socio-economic class, ambition and obsession. तो ये रहा आपका द ह्यूमन कॉमेडी. नेक्स्ट है मैडम बोवरी. बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, गुस्ताव फ्लॉबर्ट का है मैडम बोवरी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है ना. जब भी हम लोगों को ये बोला जाता है कि इंपॉर्टेंट नॉवेल्स आपको कंप्लीट करने हैं, वर्क्स आपको कंप्लीट करने हैं, ये भी उनमें से उन्हीं का एक पार्ट होता है. It's considered a masterpiece of French realist fiction. Madame Bovary is the story of a middle-class woman whose rampant consumerism, debt and extramarital affairs lead to tragedy and her suicide. Madame Bovary was first published in installments in a magazine in 1856. In 1857, Flaubert was taken to court by the French government, which charged that the novel was obscene. However, his lawyer convincingly defended his case and Madame Bovary was published in book. Madame Bovary was published in book form soon afterward. The novel is noted for Flaubert's narrative objectivity and the psychological detail in which he accounts for the course of events initiated by his characters. नेक्स्ट आपका मिडिल मार्च, बहुत ही फेमस है, जॉर्ज एलियट, है ना. जॉर्ज एलियट का है मैरी एन इवेंस. सो मिडिल मार्च 1871 से लेकर 1872 के बीच में इज़ अ मास्टर पीस ऑफ इंग्लिश रियलिज्म. ऑब्वियस सी बात है, आपने डेफिनेटली इसका नाम सुना होगा, इंग्लिश लिटरेचर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है. मिडिल मार्च इज सेट इन अ स्मॉल फिक्शनल टाउन
in rural England and is noted for the detail with which Eliot depicted characters from all walks of life. While Middlemarch included many major characters, the central figure of the story is Dorothea Brooke, a young woman who marries an older clergyman and religious scholar because she hopes to do something meaningful with her life. Eliot explores the idea that an individual may aspire to accomplishing something significant only to be defeated by the press of social convention or some flaw of character. Such individuals may leave small marks of history, but in the larger social record, they remain unknown. Middlemarch is considered a high point in the development of the novel, elevating the form with its intellectual and metaphoric complexity. तो ये रहा आपका मिडलमार्च, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये. और इसी के साथ जो है हमारा रियलिज़म जो है ये कंप्लीट है. रियलिज़म कैसे पोर्ट्रे होता है, थीम्स क्या होते हैं, ऑथर्स क्या है, वर्क्स क्या है, ये आपके हो चुके हैं. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है हम उसमें चलते हैं. ये आपका लास्ट है ना, रियलिज़म डन है आपका, ये आपका लास्ट है. ये है सररियलिज़म, है ना. ओके, सो surrealism, अगेन रियलिज्म से मोटिवेट होकर surrealism. The strength of surrealism movement can be attributed in large part to one man, French poet André Breton. वेट कीजिए. Who helped found the movement after World War I in France. Surrealism was a reaction to Dadaism, ये हमारा हो चुका है, which was itself a reaction to the so-called logic that Dadaists believed had caused the war. Surrealism, however, sought a more constructive way to rebel against rational thought than the more negative Dadaism. Drawing on the psychoanalytic studies of Sigmund Freud, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, फ्रूडियन जो हमारे साइकोलॉजी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ड्राइंग ऑन द साइकोएनालिटिक स्टडीज ऑफ सिगमंड फ्रॉयड, द surrealists tried to expand the mind's potential by reconciling the apparently contradictory states of dream and reality. देखिए दोनों ही चीज़ों के ऊपर सिगमंड फ्रॉयड की काफ़ी थ्योरीज है, ड्रीम के ऊपर, रियलिटी के ऊपर, है ना, लाइक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स के ऊपर, है ना, आवर अटैचमेंट टू आवर इनिशियल कंडीशंस, इसके ऊपर. The surrealists tried to expand the mind's potential by reconciling the apparently contradictory states of dream and reality. In a series of sometimes dangerous experiments, Breton and others attempted to put themselves in a hallucinatory state in which they believed they could tap their subconscious minds directly, है ना. नोटिस कीजिए, आपको इतना तो पता ही होगा कि सिगमंड फ्रॉयड ने ह्यूमन माइंड को 3 भाग में बांटा था ना. वन वॉज एड, देन वॉज ईगो, देन वॉज सुपर ईगो. एड जो हमारा एनिमलिस्टिक सेल्फ है ना, ईगो जो हमारा कल्टिवेटेड सेल्फ है, जो आप करेंटली है आपका पर्सोना, एंड थर्ड आपका सुपर ईगो जो आपका आइडियलिस्टिक सेल्फ है ना, जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं ना, जो आइडियलिस्टिक आपको जो आइडियलिस्टिक थॉट्स आपके अंदर है ना. सो सिमिलरली एक और थे कार्ल यंग, उन्होंने कॉन्शियस था, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, है ना. सो उसी का ये कॉन्सेप्ट पे ले रखा है कि ब्रेटॉन एंड अदर्स अटेम्प्टेड टू पुट देमसेल्व्स इन अ hallucinatory state in which they believed they could tap their subconscious, है ना, subconscious minds directly and extract pure thoughts untainted by the conscious mind and its rational constraints. Dadaists and surrealists were also fascinated with suicide and idolized this act, argues critic Leonid Leibach. Some in theory, some in fact, since the surrealists prized individual revelation over conscious forms. ये बहुत ही important है, जो surrealists हैं they prized individual revelation, है ना, over conscious forms. Themes varied among the poets, although many wrote about some form of love or nature. While Breton and Philippe Saupault wrote the magnetic fields, considered by many
to be the first truly surrealist text in 1919. इसीलिए जो ऊपर जो है मूवमेंट है वो भी देखिए 1919 ही है. It was not until 1924 when Breton published his manifesto of surrealism that the movement was officially founded. Breton ruled the group like a dictator, and his strict adherence to surrealist principles led to many expulsions and defections from the group. Nevertheless, the surrealists, who also included Paul Eluard, Robert Desnos, flourished for the next 2 decades until the outbreak of World War II. Although the majority of the group's members were poets, some tried their hand at prose as well. Breton's novel Nitja was one of the most successful attempts. Surrealism inspired related movements in painting, sculpture, drama and film, and has had a lasting influence on the creative arts as a whole. तो ये रहा आपका surrealism, है ना. रुकिए एक सेकंड. ओके, थीम्स की बात करते हैं. पहला थीम तो ऑब्वियसली बात है लव ही है. वन ऑफ द फेवरेट थीम्स ऑफ द फ्रेंच surrealists was love, particularly the ability of love to overcome reason. One of the most striking examples of this is in the scene from Desnos's prose work Duel pour Duel. Desnos places the narrator in a desert city of uninhabited ruins along a river. Despite our anxiousness, no one at all came to us. And the narrator says, the us implies that somebody is with him. Although later in the poem he admits that he was always alone in reality, the narrator blindly searches for love. Strange sickness, curious customs, bell-tolling love, bell-tolling love, where have you led me? In these tones, I find no trace of what I seek. ये उसके words हैं. He cannot find the love for which he is looking and is trapped by the curious customs of love, which overcome his reason. The narrator has mirage-like visions of caravans of beautiful women whom he waits for tormented. But they turn out to be old dust-covered women, if they even exist at all. One suspects not, especially when he later sees planes without pilots encircled with rounds of smoke. The planes land and 3 women get out. But at the end of the scene, the women are gone. The narrator repeats a variation of the opening lines of the scene, implying that he is in fact imprisoned in this dream world where love is driving him mad. So love जो आपका पहला हमारा थीम है surrealism का. नेक्स्ट है द ह्यूमन बॉडी. इसके नाम पे तो है हमारे पास एक वर्क भी है. Surrealists were noted for their descriptions of the human body, particularly of the female body. Although these depictions are sometimes done graphically in a sexual manner, at other times the surrealists describe parts of the body with a neutral attitude. A good example of the latter is Breton's poem My Wife with Her Wood Fire Hair. In the poem, Breton starts at his wife's hair and slowly works his way down her body through her thoughts of heat sparks and eyebrows like the edge of the swallow's nest to her champagne shoulders and fingers of cut hay. Each example is a vivid picture, है ना, imagery है. Each example is vivid picture of a particular part of his wife's anatomy, and with rare exception, each image is a unique creation that sets up a picture in the reader's mind.
One can envision his wife's thoughts, for example, as literal heat sparks that flare with electricity around her brain. नेक्स्ट जो आपका है ह्यूमन बॉडी के बाद वो है आपका नेचर. वेट कीजिए, एक सेकंड रुकिए. ओके, नेक्स्ट है आपका नेचर. The surrealists also incorporate nature-related images in their poetry. These generally take one of two forms. पहला, isolated images representing various aspects of nature, or second, larger images of nature's elements. Both types can be seen in Luard's poem, You Rise Up. An example of the first type appears halfway through the poem when the poet writes, "You sing night hymns on the strings of the rainbow." A rainbow is a positive symbol of nature, which is consistent with the overall tone of the poem, in which Luard sings the praises of women. As for the second type of nature, Luard includes three of the four elements: water, earth and fire, elsewhere in the poem. He starts off with the two lines, "You rise up, the water unfolds. You lie down, the water opens." The elemental image of water often implies life, and in this case the poet is remarking about how women are part of the process of creating life and are so are one with the life-giving water, which closes and opens to accommodate the woman in the poem. This idea is reinforced in the rest of the poem, first through the use of earth, "You are the earth taking root and on which everything is built," then through fire. तो ये रहा हमारा थर्ड, है ना, नेचर. नेक्स्ट है आपका, एक सेकंड रुकिए, यू सैक्रिफाइस टाइम. ओके, नहीं, ये इसका पार्टी होगा ना, ये पार्टी होगा. टू द इटर्नल यूथ ऑफ द एग्जैक्ट फ्लेम विच वेल्स नेचर इन रिप्रोड्यूसिंग इट. ओके, हाँ, ये जो है ये वर्ड्स हैं. गिव मी अ मोमेंट, इससे पहले कि हम आगे जाए, गिव मी अ मोमेंट. ओके, चलिए आगे चलते हैं. सो यू सैक्रिफाइस टाइम, तो ये पोएम का पार्ट है ना. यू सैक्रिफाइस टाइम टू द इटर्नल यूथ ऑफ द एग्जैक्ट फ्लेम विच वेल्स नेचर इन रिप्रोड्यूसिंग इट. इन द अर्थ इमेज, जो ये एलिमेंटल हम यूज़ कर रहे हैं, इन द अर्थ इमेज द वुमन टेक्स रूट, प्रोवाइडिंग अ सॉलिड फाउंडेशन फ्रॉम विच टू बिल्ड ह्यूमैनिटी. In the fire image, the woman sacrifices the majority of her life to the bearing and raising of children, a cycle that repeats itself eternally. It should be noted, however, that even though this poem seems to make use of traditional contexts for images,
In many cases, the word a surrealist uses does not always match its traditional meaning. अब आते हैं नेक्स्ट. तो ये रहे हमारे थीम्स. रिप्रेजेंटेटिव ऑथर्स पे हम आ चुके हैं. लुइस एरागॉन, एंड्रे बिटन जो हमारे मेन पर्सन है यहाँ के, रेने क्रिवल, रॉबर्ट डेस्नॉस, पॉल इलुआर्ड, पियर रेवर्डी एंड फिलिप सोपाल्ट. यही है. आई गेस इंपॉर्टेंट तो है एंड्रे ब्रिटन ही है. या मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास कुछ वर्क्स है. बेबीलोन पहला, रेने क्रेवल का. वेट कीजिए, गिव मी अ मोमेंट ना. ये ओके. ठीक है, आगे चलते हैं. सो वर्क्स पे आ गए थे हम लोग सररियलिज्म के. पहला है बेबीलोन. रेने क्रिवल्स surrealist novel Babylon was published in French in 1957. An English translation by K. Boyle did not appear until 1985, 50 years after Creville's death by suicide. Again, surrealism का ये भी एक important element था, suicide. This novel, far from ambiguous, tells the story of a broken family. The husband abandons his wife and daughter. The wife's father, मतलब जो grandpa है, is a positivist, someone who believes everything can be explained rationally. He determines that his daughter should remarry. The fiancé is very handsome, but grandma runs off with him instead, puzzling grandpa even further. Creville's purpose was to affect a critique of positivism, which he does in a very funny readable book. तो ये रहा आपका पहला वर्क बेबीलोन. नेक्स्ट वर्क जो है वो है कैपिटल ऑफ पेन. Like Aragon, Paul Eulard's greatest works were written before his writings became more political in nature. Capital of Pain, originally published in 1926, is a case in point. Although Eluard had published volumes of poetry, this was one of his first volumes of surrealist poetry, and it helped to establish his reputation as a poet and bring attention to the surrealist movement. In Capital of Pain, Eulard focuses on two diametrically opposed ideas. पहला love, दूसरा loneliness, and expounds on each with a passion and intensity for which he became famous, invoking images of the individual and the universal. Capital of Pain was a key formative work in the poet's career. Capital of Pain was a key formative work in the poet's career. Of all of the French surrealists, Eulard was praised by critics as the most talented
and works like Capital of Pain have continued to receive favorable attention over the years. जल्दी से कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट होते ही जो है आज ही अगर टाइम बचा तो आज ही जो है हम शॉर्ट नोट्स वाला जो हमारा सेक्शन है वो स्टार्ट कर देंगे. नेक्स्ट है आपका लिबर्टी और लव. लिबर्टी और लव डेस्नॉस का वर्क है. डेस्नॉस surrealist novel was censored by a French court because of its graphic nature and the eroticism in some passages. The novel, first published in 1927, is like other surrealist novels in that it has a loose structure. The story relates a hazy series of events in which lovers Corsair Sanglot and Louis Lame drift in and out of each other's lives. Characters pop in and out of the narrative as if in a dream. The novel, which was much descriptive detail, was noted by critics for its dreamlike qualities. It was first translated into English 1994, at which time it received favorable reviews. तो ये रहा हमारा एक और वर्क. नेक्स्ट है द मैग्नेटिक फील्ड्स. The story behind the genesis of the magnetic fields is one of intense and one could say fanatical commitment to a cause. In 1919, Breton and Sopault were performing a number of experiments, attempting to tap into their unconscious minds, जो हमने ऊपर पढ़ा था, through techniques such as automatic writing. At one point, they induced themselves into a hypnotic trance and began a writing session that lasted 8 days. The output, a series of prose poems, was published initially in 1919 in their journal Literature. The magnetic fields, considered by many to be the first surrealist text, was important to the movement's development, है ना, magnetic fields. तो ये हो गया हमारा magnetic fields. नेक्स्ट है मैनिफेस्टो ऑफ सर्रियलिज्म, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, ब्रेटन का है, एंड्रे ब्रेटन का. सो ब्रिटेन्स फर्स्ट मैनिफेस्टो ऑफ सर्रियलिज्म published in 1924 met with opposition. The manifesto began by criticizing current forms of writing such as the novel in very abrasive and unflattering ways. So it is no wonder that it was not liked. Although the term surrealism was coined by his deceased friend Guillaume Apollinaire, Breton claimed in Manifesto of Surrealism the title for his movement and offered an official definition. Psychic automatism is in its pure state, by which one proposes to express verbally by means of written word or in any other manner the actual functioning of thought dictated by thought in the absence of any context exercised by reason exempt from any aesthetic or moral concern. The manifesto features various other items, including a list of names of the people Breton considered surrealists, an in-depth description for how to perform the method of automatic writing, and several examples illustrating what surrealism is. Breton followed this work into 2 other manifestos and several other works that further defined the goals and ideals of the surrealists. देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक सेकंड रुकिए, कुछ देर रुकिए, मैं भी आता हूँ, एक सेकंड रुकिए.
ओके, सो नेक्स्ट वी हैव, आई गेस ये लास्ट वर्क है, या ये लास्ट वर्क है, Paris Peasant. Louis Aragon's Paris Peasant was originally published in 1926. The surrealist novel employs two of the surrealist's favorite inspirational locations, a passageway at the Paris Opera and the Buttes Chaumont Park. Paris Peasant was well received, especially by critics who praised the novel's ability to mix realistic elements of the Paris locations with the surrealist element of Aragon's created world. Much of the critics' favorable attention stemmed from the fact that they were used to surrealist. So much of the critics' favorable attention stemmed from the fact that they were used to surrealists who did not base their prose or novels on real places, which were harder to produce through automatic writing. And so, Aragon's novel was a welcome change. The novel also contained Aragon's own definition of surrealism, which differed from Britain's definition of the Manifesto of Surrealism. Aragon emphasized in Manifesto of Surrealism the use of the image in a random and passionate way and believed that each image forced him to revise the universe. यहाँ आपका surrealism एंड होता है. PDF आपको आज ही मिल जाएगा, है ना. इस सेशन के एंड में आपको PDF सेंड कर दिया जाएगा, दोनों ही, या इससे पहले जो भी, अगर आई गेस 2 या 3 बाकी है, तीनों के तीनों आपको सेंड कर दिया जाएगा ग्रुप में, चेक कर लीजिएगा. और अभी के लिए विल मूव टू, अभी भी हमारे पास टाइम है, वी हैव 20 मिनट्स लेफ्ट, सो हम मूव करते हैं हमारे शॉर्ट नोट्स पे. ओके, सो जितने भी लिटरेरी टर्म्स हैं सभी इसमें आ जाएंगे, कोई मिस नहीं करने वाले. कुछ तो हमारे इसी में आ गए थे, है ना. कुछ हमारे क्या कहते हैं इसका नाम, लिटरेरी मूवमेंट के अंदर ही आ गए थे, है ना. और जो नहीं आए थे वो इसमें आ जाएंगे. सो विल स्टार्ट विद एब्स्ट्रैक्ट. क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट? तो यूजुअली एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है कि किसी चीज़ को बहुत ही शॉर्ट में लिखना, है ना. पूरा आइडिया जो है, फॉर एग्जांपल इवन जब आप पीएचडी करने वाले होते हैं ना, आप पीएचडी कर रहे होते हैं, आपको जो है उसमें एब्स्ट्रैक्ट लिखना होता है ना. तो वो एक शॉर्ट, एक तरह जो थीसिस है आपका, या फिर इवन जो रिसर्च प्रपोजल है उसमें भी एक एब्स्ट्रैक्ट होता है ना. सो वो है कि एक शॉर्ट वे में आपने पूरा का पूरा जो चीज़ है, मैटर जो है वो समराइज़ कर दिया. देखिए क्या लिखा हुआ है, यूज्ड एज अ नाउन द टर्म रिफर्स टू अ शॉर्ट समरी, है ना. शॉर्ट समरी, एक सेकंड रुकिए, इट इज़ यूज्ड एज अ शॉर्ट समरी or outline of a longer work. As an adjective applied to writing or literary works, abstract refer to words or phrases that name things not knowable through the 5 senses. ये होता है abstract ideas, है ना. आपने abstract noun पढ़ा ही होगा. Examples of abstracts include the cliff notes summaries of major literary works, है ना. जो हम लोग summaries पढ़ते हैं वो इन अ वे abstract ही है. Example of abstract terms of concepts include idea guilt. ओके, सो ये तो abstract ideas है, तो छोड़िए. मेजरली जो अगर हम लिटरेचर की बात करें तो ये शॉर्ट समरीज है ना. आपका जो पूरा आइडिया है वो कंप्राइज्ड इन से 100 वर्ड्स, है ना. नेक्स्ट है आपका एक्ट. क्या होता है? अ मेजर सेक्शन, एक सेकंड रुकिए, या ओके. नेक्स्ट है आपका एक्ट. एक्ट ऑब्वियस सी बात है, हम लोग जब कोई भी ड्रामा हम करते हैं तो उसके अंदर सीन होता है, उसमें एक्ट्स होते हैं ना. सो वी इनकाउंटर एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3, एक्ट 4, एक्ट 5. यूजुअली हमें 5 के स्ट्रक्चर में दिख जाता है. सो 5 एक्ट्स होते हैं और हर एक एक्ट के अंदर अपना अपना सीन होता है ना. लाइक किसी में 4 सीन, किसी में 5 सीन, किसी में 7 सीन्स, है ना. ओके, सो एक्ट क्या है? अ मेजर सेक्शन ऑफ द प्ले, है ना. क्योंकि माइनर सेक्शन हमारे पास सीन है, तो मेजर सेक्शन जो है वो है हमारा एक्ट. A major section of a play, acts are divided into varying number of shorter scenes, है ना, जिसे हम scene कहते हैं. From ancient times to the 19th century, plays were generally constructed of 5 acts, unless आप एक सेकंड रुकिए, या 5 acts. But modern works, especially
typically consists of 1, 2 और इवन 3 एक्ट्स है ना. यूजुअली ये 5 के बाद जो है वो 3 एक्ट वाला ही फेमस है. एग्जाम्पल्स ऑफ 5 एक्ट प्लेज इंक्लूड द वर्क्स ऑफ सोफोक्लेस एंड शेक्सपियर है ना. ऑलमोस्ट ऑल शेक्सपियर जो ड्रामाज हैं वो 5 एक्ट्स के हैं. वेल द प्लेज ऑफ आर्थर मिलर कॉमनली हैव 3 एक्ट स्ट्रक्चर. तो ये तो हो गया एक्ट. नेक्स्ट आपका एलेगरी. ओके, नेक्स्ट आपका एलेगोरी एक नरेटिव टेक्निक है. अ नरेटिव टेक्निक इन विच कैरेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग थिंग्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एज यूज टू कन्वे अ मैसेज और टीच अ लेसन, इसे हम कहते हैं एलेगोरी. एलेगोरी इज टिपिकली यूज टू टीच मॉरल, ethical or religious lessons, but is sometimes used for satiric or political purposes. Examples of allegorical works include Edmund Spenser का The Fairy Queenie and John Bunyan का The Pilgrim's Progress. नेक्स्ट है आपका allusion. ये तो बहुत ही सिंपल है. allusion मतलब जब भी हम unexplained reference की बात कर रहे हो. A reference to a familiar literary or historical person or event used to make an idea more easily understood. For example, describing someone as Romeo makes an allusion to William Shakespeare's famous young lover in Romeo and Juliet ना. सो आप जब इसे रोमियो वर्ड को यूज़ करेंगे किसी पोएम में या किसी टेक्स्ट में, यू वोंट हैव टू स्पेसिफाई जो है ना, यू वोंट हैव टू स्पेसिफाई कि आपने ये वर्ड का मीनिंग क्या है, वाई रोमियो एंड एटसेट्रा एटसेट्रा. सो दैट इज देयर. नेक्स्ट है आपका एनालॉजी. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इट्स लाइक एन एग्जाम्पल है ना, एनालॉजी देना, एक एग्जाम्पल देना. सो अ कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स मेड टू एक्सप्लेन समथिंग अनफेमिलियर थ्रू इट्स सिमिलैरिटीज टू समथिंग familiar, or to prove one point based on the acceptedness of another, acceptedness of another. वेट कीजिए. Okay, let's move forward. So we have analogy, a comparison of two things made to explain something unfamiliar through its similarities to something familiar, or to prove one point based on the acceptedness to another. Similes and metaphors are type of analogies. Analogies often take the form of an extended simile, as in William Blake's aphorism, as the caterpillar chooses the fairest leaves to lay her eggs on, so the priest lays his curse on the fairest joys. तो यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है ना प्रीस्ट को, ठीक है, कैटरपिलर से. नेक्स्ट है आपका एंग्री यंग मैन. ये आपने सुना ही होगा है ना, जो हमारे कैरेक्टर्स है ना, कैरेक्टर्स के अंदर हम पढ़ते हैं एंग्री यंग मैन. ये क्या है? अ ग्रुप ऑफ ब्रिटिश राइटर्स ऑफ द 1950s whose work expressed bitterness and disillusionment with society. Common to their work is an anti-hero who rebels against a corrupt social order and strives for personal integrity. The term has been used to describe Kingsley Amis, John Osborne, Colin Wilson,
जॉन वेन एंड अदर्स, नाम आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये रहे हमारे एंग्री यंग मैन। नेक्स्ट है आपका एंटेगनिस्ट। ये तो बहुत ही सिंपल है, आपको पता ही एंटेगनिस्ट क्या होता है। एंटेगनिस्ट मतलब जो उस पर्टिकुलर वर्क में विलन हो, है ना। द मेजर कैरेक्टर इन अ नरेटिव or drama who works against the hero or protagonist. An example of an evil antagonist is Richard Lovelace in Samuel Richardson's Clarissa, while a virtuous antagonist is Macduff in William Shakespeare's Macbeth. तो ये है आपके एंटेगनिस्ट। नेक्स्ट आता है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, है ना। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सो द प्रेजेंटेशन ऑफ एनिमल्स, है ना ये। और अगर आप बात करें पर्सोनिफिकेशन की, है ना, ये बहुत ही सिमिलर से लगते हैं ये पर्सोनिफिकेशन एंड देन वी हैव एपोस्ट्रोफे। ये बहुत ही, जो ये लिटरेरी डिवाइसेस हैं, ये बहुत ही सिमिलर साउंड करते हैं, या फिर एटलीस्ट मीनिंग जो है इनका बहुत ही सिमिलर होता है। द प्रेजेंटेशन of animals or objects in human shape or with human characteristics. The term is derived from the Greek word for human form. The fables of Aesop, the animated films of Walt Disney, and Richard Adams' Watership Down feature anthropomorphic characters. तो ये होता है आपका एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट है आपका एंटी हीरो। नाउ अब हम ऑब्वियसली जो है एंटेगनिस्ट पढ़ चुके हैं, सो या इन अ वे वही है। लेट्स सी अ सेंट्रल कैरेक्टर इन अ वर्क ऑफ लिटरेचर हु लैक्स ट्रेडिशनल हीरोइक क्वालिटीज सच एज करेज, फिजिकल prowess and fortitude. Anti-heroes typically distrust conventional values and are unable to commit themselves to any ideal. They generally feel helpless in a world over which they have no control. Anti-heroes usually accept and often celebrate their positions as social outcasts. A well-known anti-hero is Eucerin in Joseph Heller's novel Catch-22. छोड़िए, एंटी हीरो आपको पता चल गया। नेक्स्ट है आपका एंटी नॉवल किसे कहते हैं। ओके वेट कीजिए यहाँ पे, गिव मी 2 मिनट्स, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं। Give me a moment. Okay, yeah. Okay. Okay, give me a moment.
ओके ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. हाँ, तो हम थे एंटी नॉवल पे, है ना. एंटी हीरो हमारा हो चुका. नेक्स्ट हमारा है एंटी नॉवल. A term coined by French critic Jean-Paul Sartre, existentialist. It refers to any experimental work of fiction that avoids the familiar conventions of the novel. So any novel, है ना, any particular novel जो है, जो familiar conventions of novel है, इसको नहीं मानती है ना. The anti-novel usually fragments and distorts the experience of its characters, forcing the reader to construct the reality of the story from a disordered narrative. इसे हम कहते हैं एंटी-नॉवल. नेक्स्ट आपका है एंटीथीसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. द एंटीथीसिस ऑफ समथिंग इज द डायरेक्ट ऑपोजिट, बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ है ना उसका. एंटीथीसिस. इन लिटरेचर द यूज ऑफ एंटीथीसिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच रिजल्ट्स, sorry, the use of antithesis as a figure of speech results in two statements that show a contrast through the balancing of two opposite ideas. Technically, it is the second portion of the statement that is defined as the antithesis, because पहले वाला तो thesis ही होगा ना. The first portion is the thesis. An example of antithesis is found in the following portion of Abraham Lincoln's Gettysburg Address. Notice the opposition between the verbs remember and forget and the phrases what we say and what they did. The world will little note no longer, nor long remember what we say here, but it can never forget what they did here, है ना. सो ये रहा आपका एंटीथीसिस, जहाँ पे वो कम्प्लीटली जो है ऑपोजिट हो जाएगा. नेक्स्ट है आपका एपोक्राइफा. ओके, हाँ ओके. नेक्स्ट है आपको राइटिंग्स टेंटेटिवली एट्रीब्यूटेड टू एन ऑथर बट नॉट प्रूवन और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड टू बी देयर वर्क्स, है ना. ऐसा बहुत सारे ऑथर के साथ किया गया है. इवन शेक्सपियर के जो वर्क्स हैं वो भी उन्हें कम्प्लीटली सारे वर्क्स जो है एट्रीब्यूट नहीं किए जाते, और जो उससे पहले वाले ऑथर्स हैं उनको लेके हम बहुत श्योर भी नहीं है ना. सो राइटिंग्स टेंटेटिवली एट्रीब्यूटेड टू एन ऑथर बट नॉट प्रूवन और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड टू बी देयर वर्क्स. द टर्म वॉज, एक सेकंड रुकिए, एक और मैसेज आया आई थिंक. ओके, इसे हटाते हैं. या ओके ओके ओके, सो ठीक है. हाँ, तो हम कहाँ पे थे. The term, okay, writings tentatively attributed to an author but not proven or universally accepted to be their works. The term was originally applied to certain books of the Bible that were not considered inspired and so were not, included in the sacred canon. Geoffrey Chaucer, William Shakespeare, है ना. Thomas Kyde, मैंने विलियम शेक्सपियर का नाम लिया था. थॉमस काइड, थॉमस मिडल्टन एंड जॉन मार्स्टन, है ना. इवन क्रिस्टोफर मार्लो भी इस जगह पे है. जॉन मार्स्टन ऑल हैव एपोक्राइफा. एपोक्राइफल बुक्स इन द बाइबल include the Old Testament's Book of Enoch and New Testament's Gospel of Peter. नेक्स्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपोलोनियन एंड डायोनाइजियन, है ना. ये कई बार आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है. आपको दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए. सो द टू इम्पल्सेस बिलीव टू गाइड ऑथर्स ऑफ ड्रामेटिक ट्रेजेडी, है ना. टू इम्पल्सेस हैं, एक है अपोलोनियन और दूसरा है डायोनाइजियन. दिस आर बिलीव टू गाइड ऑथर्स ऑफ ड्रामेटिक ट्रेजेडी, ठीक है. द अपोलोनियन इम्पल्स इज नेम्ड आफ्टर अपोलो, है ना, गॉड अपोलो, द ग्रीक गॉड ऑफ लाइट एंड ब्यूटी एंड द सिंबल ऑफ इंटेलेक्चुअल ऑर्डर. तो ये है हमारा अपोलोनियन. जो डायोनाइसियन है इम्पल्स इज नेम्ड आफ्टर डायोनाइसिस, द ग्रीक गॉड ऑफ वाइन एंड द सिंबल ऑफ अनरिस्ट्रेन्ड फोर्सेस ऑफ नेचर. द अपोलोनियन इम्पल्स इज टू क्रिएट अ रैशनल हारमोनियस वर्ल्ड, है ना. सो ये बहुत ही थॉटफुल होगा. रैशनल एंड हारमोनियस वर्ल्ड, while the Dionysian is to express the irrational forces of personality, है ना. So more of a impulse type. Friedrich Nietzsche used these terms in The Birth
of the tragedy of tragedy to designate contrasting elements in Greek tragedy. So दोनों ही चीज़ें आपको याद रखना है. एक जो है वो गॉड ऑफ लाइक नॉलेज है एक तरह से, है ना, इट्स लाइक रैशनल थॉट्स है. और दूसरा वाला जो हमारा डायनोसियन है, इट्स टू एक्सप्रेस द इरैशनल, है ना, इरैशनल फोर्सेस ऑफ पर्सनैलिटी. तो एक रैशनल है जो कि अपोलोनियन और एक है इरैशनल जो कि है डायनोसियन. नेक्स्ट है अपोस्ट्रॉफी. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये कोई एक आप किसी ऐसे पर्सन से जो है पूछ रहे हैं जो वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, जो अब वो उसका आंसर जो है वो नहीं दे सकता. सो स्टेटमेंट, क्वेश्चन और रिक्वेस्ट एड्रेस टू एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, है ना, इट्स एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट और टू अ नॉन एग्जिस्टेंट और एब्सेंट पर्सन, है ना. तो आप फॉर एग्जांपल आप सूरज से क्वेश्चन कर रहे हो तो वो तो आपका आंसर दे नहीं सकता, वो इनएनिमेट है. वहीं पे आप जो है किसी ट्री से पूछ रहे हो या फिर, है ना, किसी पर्सन से पूछ रहे हो, लेकिन वो पर्सन यहाँ पे है ही नहीं, है ना. आपका क्वेश्चन वो क्वेश्चन ही नहीं सुन पाएगा तो वो आंसर क्या देगा, है ना. सो वो यहाँ पे है नहीं, है ना, ही कैन नॉट हियर यू. इन दैट केस नॉन एग्जिस्टेंट और एब्सेंट पर्सन रिक्वेस्ट्स फॉर इंस्पिरेशन फ्रॉम द म्यूजेस इन पोएट्री आर एग्जाम्पल्स ऑफ एपोस्ट्रोफी, है ना. जब हम म्यूज़ को बुलाते हैं, जब जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट में, है ना, म्यूजेस को इन्वोक कर रहे थे, तब की बात कर रहे हैं. सो रिक्वेस्ट्स फॉर इंस्पिरेशन फ्रॉम द म्यूजेस इन पोएट्री आर एग्जाम्पल्स ऑफ एपोस्ट्रोफी, as is Mark Antony's address to Caesar's corpse in William Shakespeare's Julius Caesar. Oh, pardon me, thou bleeding piece of earth, that I am meek and gentle with these butchers. Woe to the hand that shed this costly blood. है ना. नेक्स्ट आपका है आर्केटाइप, है ना. आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म होता है ना. नॉर्थरोप फ्राई इसके लिए बहुत फेमस है, कार्ल जंग इसके लिए बहुत फेमस है. द वर्ड आर्कटाइप इज कॉमनली यूज्ड टू डिस्क्राइब एन ओरिजिनल पैटर्न और मॉडल, है ना. आर्कटाइप है ना, इसके ऊपर जो है फॉर एग्जांपल द गुड मदर, है ना, या फिर द ओल्ड लाइक मॉन्क टाइप पर्सन, है ना. आपको ऐसे द हीरो, है ना, द काइंड हीरोइन, है ना, इस तरह से आपको मिलेंगे कैरेक्टर्स. द वर्ड archetype is commonly used to describe an original pattern or model from which all other things of the same kind are made. The term was introduced to literary criticism from the psychology of Carl Jung. It expresses Jung's theory that behind every person's unconscious or repressed memories of the past lies the collective, जिसे हम कहते हैं collective unconscious of the human race. Memories of the countless typical experiences of our ancestors, ये भी आपके माइंड में है. These memories are said to prompt illogical associations that trigger powerful emotions in the reader. Often, the emotional process is primitive, even primordial. Archetypes are the literary images that grow out of the collective unconscious. They appear in the literature as incidents and plots that repeat basic patterns of life. They may also appear as stereotyped characters. Examples of literary archetypes included themes such as birth and death and characters such as Earth Mother. बाकी जो इसके बाद वाले हमारे वो हैं टर्म्स हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. PDF आपको मिल जाएंगे, है ना. 26 जो हमारे लिटरेरी मूवमेंट्स है ये हमारे क्लियर हैं. थैंक यू फॉर बीइंग हियर. विल एंड दिस ईयर.